बताइएगा। Your Lordship, yesterday presence of SDO Jatara was called for. इस क्यों बुलाया था इनको? But for the service report, my lord, is required to seen by the honorable court. हाँ बताइएगा, कहाँ है वो The सर्विस? original record, my lord, he's come with the original record. हाँ लाइए ना, ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाइएगा। Service report. By the previous officer, my lord, he joined on the month of August. ठीक है ठीक है, आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम, ठीक है। इफ दे आर एबल टू शो सर्विस इट इज फाइन। कहाँ है वो सर्विस रिपोर्ट? इसको सुपुर्द किया गया था नोटिस लेके जाने के लिए? सर कोटवार को उसमें सर। कोटवार जाता है? जी कहाँ है कोटवार के लिए एंडोर्समेंट? कहाँ है? ट्रैक कर दीजिए जरा। कोटवार को भेजा था आपने? भाई आप जिस किसी भी व्यक्ति को शासकीय नोटिस लेके जाने के लिए अधिकृत करेंगे, वो व्यक्ति का नाम आएगा ना कि इसको फलाने को अधिकृत किया जाता है। क्योंकि जितनी हमारी जानकारी, डिस्पैच प्यून जाता है देने के लिए, प्रोसेस सर्वर जाता है, सॉरी नॉट डिस्पैच प्यून, प्रोसेस सर्वर जाता है। आपके यहाँ भी होता है ना प्रोसेस सर्वर कलेक्ट्रेट में? ये सब माल जमादार के थ्रू हम लोग हाँ, भेजते हैं। हाँ तो कहाँ है वो कोटवार का एंडोर्समेंट? तो इसमें नहीं लगा कोटवार कितने बजे गए थे वहां पर नोटिस लेकर? सर, जानकारी नहीं जी सर, ऐसी जानकारी पढ़िए ना, फिर नोटिस ही पढ़िए। आप तो बाद में आए हैं, समय तो डालेंगे कितने बजे कोटवार गए, किस पते पर गए। सर वो नहीं लिखा हुआ है। तो फिर इस नोटिस को कैसे मान लेंगे? आप अपने कमरे में बैठ के किसी को भी नोटिस शामिल कर दीजिए, कल को हाईकोर्ट को नोटिस शामिल कर दीजिएगा आप, और फिर कल को हमारा गिरफ्तारी वारंट निकलवा दीजिएगा। क्योंकि तामील तो कर दी आपने इस चैम्बर में बैठ के। इसको सेटिसाइड कर रहे हैं ऑर्डर को, आप नोटिस दीजिए, फ्रेश ऑर्डर पास करिए, आपको वो लिबर्टी देते हैं। लिखिएगा, मिस दिशा रोहितास फॉर द पिटिशनर सुबोध कठर अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम? सर लोकेंद्र सिंह सरल। श्री लोकेंद्र सिंह सरल, सब डिविजनल ऑफिसर, यस सर। सब डिवीजन जतारा डिस्ट्रिक्ट टी। नेक्स्ट दिस पिटीशन इज number 1. हाँ श्री Vishnu Chandra Dwivedi for respondent number 1. Next, this petition is filed by the petitioner being aggrieved of order dated 29/12/22, annexure P2, passed by the subdivisional officer, subdivision Jatara, Tikamgarh. The order dated 9/8/2023, annexure P1, passed by the additional commissioner, Sagar Division, Sagar, in case number 760/A-89/year 2022-23. Full stop. Petitioner's contention is that before passing of the order annexure P2 by the subdivisional officer, neither any show cause notice was given to the petitioner nor any inquiry was conducted. Thus, the order annexure P2 having been passed in violation of the principles of natural justice is not sustainable in the eyes of law. Next para. Thus, it is submitted that consequential order passed by the additional commissioner in appeal is also to be set aside, as it has failed to notice that once an order is passed by the subdivisional officer within bracket revenue subdivision Jatara without following the due process of law and the principles of natural justice, that order is not sustainable in the eyes of law. It was passed at the behest of and to favor the respondent number 1. Next paragraph. Shri Saral, on request of this court, is present in the court. Full stop. He has brought original file from the office of the subdivisional officer within bracket revenue bracket close subdivision Jatara. Full stop. Shri Saral submits that he was not holding the post of subdivisional officer at the relevant time, and order was passed by his predecessor. Full stop. Next paragraph. When the original file is perused and Shri Saral is requested to throw light on the fact that
whether Kotwar had mentioned place of service of notice and the time on at which he had gone to serve the notice, because he has only mentioned within inverted commas लेने से इनकार, यही लिखा है ना, लेने से जी, ले- इनकार, and then two persons have signed, then Shri Saral fairly submits that there is no mention of either time or the place where the notices were taken to be served. In view of such facts, impugned order having been passed without service of notice is hereby set aside. Full stop. Which respondents will be at liberty to issue fresh notice, serve it properly, which petitioner shall be obliged to accept, and for which he petitioner shall appear before the subdivisional officer on, आपको डेट दे देते हैं, उस तारीख तक नोटिस दे दीजिएगा, on 7th December 2023, and shall thereafter afford at least 7 days time to file reply to the show cause notice, and after, if reply is filed, then after opportunity of hearing, for which petitioner and the private respondent number 1 shall remain personally present on 19 December 2023, shall pass orders on its own merits. आपका हमने पूरा सिस्टम ही सेट कर दिया, आपको अब नोटिस लेके इनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 तारीख को आएंगे, आप नोटिस दे दीजिएगा इन्हें और नोटशीट पे साइन करा लीजिएगा, जवाब देंगे 7 तारीख के बाद में, फिर सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद में आप फैसला करिएगा, and the subdivisional officer shall decide the matter within further 10 days from the date of hearing. ठीक है, since a timetable has been fixed in presence of the petitioner and the private respondent number 1 and the subdivisional officer, there will be no need to issue fresh notice except to hand over show cause notice to the petitioner if so required on 7/12/2023. In above terms, petition is disposed of. Till such time kindly be हाँ? permit, तो उस समय तक हमें परमिट किया जाए काम करने के लिए, क्योंकि हम आज हमने काम पे हमने इस पे कुछ और थोड़ा ना कर रहे हैं, आप काम करते रहिएगा, ठीक है ना, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वाशमेंट ऑफ द ऑर्डर लॉट, हाँ ठीक है ना, ठीक है, चलिए। उस समय तक हमें परमिट करें। आज भी अरे भाई, यू विल कंटिन्यू टू वर्क 15 दिन में, ये थोड़ा ना कर देंगे 15 दिन में, तो ये पूरा कार्यक्रम ही पूरा हो जाएगा 15-20 दिन में, ठीक है, उतना चलिए, ऑब्जर्वेशन दे देते। नहीं नहीं